हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले बता दूं, ये जो है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले मैंने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बताया था। तो चलिए आज के इसके आंसर लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए मीनिंग, जिसमें अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों को लेकर डिफरेंस दिया गया है। सबसे पहले देखिए पावर टू टेक डिसीजन, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क एंड आंसरेबल फॉर द आउटपुट ऑफ असाइन्ड टास्क। उसके बाद देखिए डेलीगेशन के, कैन बी डेलीगेटेड, कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। उसके बाद देखिए ओरिजिन, अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद देखिए लास्ट, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर एंड फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर। सबसे पहले देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ पीपल। फर्स्ट, व्हेन टू और मोर पर्सन्स come together for undertaking a common work, then the organization comes into existence. Full stop. So an organization exists with a number of persons. उसके बाद देखिए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फुल स्टॉप। द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑल्सो लेड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फुल स्टॉप। द वर्किंग इन द कॉमन डायरेक्शन इज द एसेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए डिविजन ऑफ वर्क, द टोटल वर्क ऑफ द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इंटू एक्टिविटीज एंड फंक्शंस। फुल स्टॉप। वेरियस एक्टिविटीज आर असाइन्ड टू डिफरेंट पर्सन्स फॉर देयर efficient accomplishment. First of, when one person performs the same work repeatedly, he develops specialization in it and his efficiency improves. उसके बाद देखिए coordination, when different persons are assigned different tasks, then they try to attain them in their own ways. First of, individual efforts may not go towards the attainment of main business goals. First of, there is a need to coordinate the activities of various persons so that their efforts lead to the main goals. उसके बाद देखिए authority responsibility relationship, an organization consists of various positions arranged in a hierarchy with well defined authority and responsibility. First of, a relationship between superior and subordinate is clearly established. First of, the task is assigned at each level and necessary authority is delegated to accomplish them. उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। फर्स्ट, every order or information passes from upward to downward and reaction of such communications go upward. उसके बाद देखिए एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। उसके बाद देखिए सबसे नंबर 1 है स्पेशलाइजेशन। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज रिपीटेडली परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। फर्स्ट, a person performing the same work regularly, he becomes specialized in it. The organization gets the benefit of specialization. Number 2 देखिए no overlapping of work. In this type of organization, every work is properly planned and assigned. First, there is no question of same work being performed by more people. तो आज के लिए बस इतने। अगले पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2014-2018 में आ चुका है, उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो आई होप को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस वीडियो सबको मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और हाँ, अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एट वेरी रीजनेबल रेट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।